Hi guys, good evening. If you can hear me, please type yes. Super. All right. Okay, I'm just waiting for more people joining in. All right, let's begin. Good evening. Vineet, I think you've joined on Zoom rather than YouTube. All right, let's begin. All right, guys, if you can see my chart properly, please type yes, I can. If you can see our charts properly, please type yes, I can. Super. All right, let me just fix this. All right, brilliant. So I've got about what 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or 15 stocks that have set up good opportunities in the investment time frame, end of month analysis, and I've got about 19 stocks for end of week analysis. So हम पहले end of week analysis कर लेते हैं, फिर हम end of month analysis पे आ जाएंगे. End of week analysis हम जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि हम real मुद्दे पे जो हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या हो रहा है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अब री एंट्री अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं या देने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्गर टर्म के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं. बिकॉज तब हमें पता चलेगा कि क्योंकि इस बार काफी करेक्शन हुआ है मार्केट्स में, काफी स्टॉक्स गिरे हैं, तो हो सकता है अब ईएमए के आसपास आ गए हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है. सो पहला स्टॉक हम पहले हम एंड ऑफ वीक एनालिसिस कर लेते हैं. इसका मतलब आई हैव गॉट माय वीकली चार्ट हियर, माय डेली चार्ट इन द मिडिल एंड माय आवरली चार्ट हियर. डेली चार्ट में हमने ये ब्लैक कलर का फ्यूचर मंथली सीपीआर लगा रखा है और यहाँ पे ग्रीन कलर का वीकली सीपीआर आर्ली में लगा रखा है. ऑलराइट, नाउ ऑफ कोर्स वी आर फोकसिंग ऑन वीकली एंड डेली चार्ट्स ओनली रादर देन फोकसिंग ऑन आर्ली चार्ट एंड डेली चार्ट इन एंड ऑफ वीक एनालिसिस. तो पहला है ब्रिटानिया इंडस्ट्री. हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, बुलिश डाइवर्जेंस, सीरीज ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस इन द डेली चार्ट एट वीकली ईएमए. प्रीवियस हाई वीकली का नहीं टूट रहा है, वो टूटना जरूरी है. आप देख सकते हो लास्ट टाइम मंथली सीपीआर के ऊपर अलर्ट था, इस बार आप ये अलर्ट वीकली हाई के ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि नैरो सीपीआर रहेगा, वेल नैरोइश रहेगा इन द वीकली चार्ट, इन द वीकली सीपीआर एंड मंथली सीपीआर भी नैरो रहेगा. तो अगर आपको मंडे को एक डिसेंट रिजेक्शन कैंडल मिले और ट्यूसडे को फॉलो थ्रू ऑन द अपसाइड मिले, देन दिस कुड बी अ डिसेंट सेटअप. आर्ली चार्ट में भी आप देख सकते हैं दिस चैनल, इफ दिस ब्रेक्स विद अ गैप, सो आप देखो मेरा अलर्ट कहाँ सेट है ना. सो मेरा मोटा मोटी ये एक गैप अप अगर खुल जाए इसके ऊपर, देन इट वुड बी फैंटास्टिक इस जोन के ऊपर.
है ना। सो ब्रिटानिया का सेटअप इस तरीके से है। देन बिरला सॉफ्ट में हमारे पास वीकली ईएमए पे नॉट द बेस्ट कैंडल, बट वीकली ईएमए पे हमारे पास डेली में बुलिश डाइवर्जेंस था, सीरीज ऑफ डाइवर्जेंसेस। ये ईएमए पे आया है, डेली ईएमए पे। अगर हम आर्ली चार्ट इसका खोलते हैं, सो आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है ये रीटेस्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो नाउ द अलर्ट इज सेट अबव the weekly CPR and the monthly CPR, so you can put the alert a little further, क्योंकि इंगल्फिंग बेयर बना हुआ है ईएमए पे, तो हम चाहते हैं कि मंडे एक बुलिश कैंडल बने और फिर हमें आगे मिले, मतलब मंडे एक बुलिश डाइवर्जेंस में, मंडे एक बुलिश कैंडल मिले एंड ट्यूसडे एक फॉलो थ्रू मिले, या एक गैप अप ओपनिंग हो। तो ये मंथली सीपीआर या तो इसके ऊपर जाए या वीकली सीपीआर के ऊपर हम बाइंग करने के लिए रेडी हो जाए। आइदर वे वी नीड सम बुलिश कैंडल ऑन मंडे। मैं इसका सीपीआर ऑन नहीं कर रहा ताकि ज्यादा हौच पौच दिखेगा। फिर हमारे पास है आरईसी। दीज आर ऑल लॉन्ग सेटअप्स दैट आई एम डिस्कसिंग, देन आई एम गोना कम टू शॉर्ट सेल। आरईसी में भी वीकली ईएमए पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस था, अभी भी टिकअप हो रहा है। अगेन ईएमए पे एंगल्फिंग बेयर बना हुआ है, नैरो मंथली सीपीआर रहेगा, नैरो वीकली सीपीआर रहेगा। इसके ऊपर जाने से, किसी के भी ऊपर जाने से हम इसकी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बाइंग की। ऑलराइट, सो वंस अगेन क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हरामी बना हुआ है, ट्यूसडे को अगर गैप अप खुलता है या फॉलो थ्रू देता है, देन दिस ऑल्सो कुड बी अ डिसेंट सेटअप। ऑलराइट, एक चीज खाली आपको ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन खुलता है या नीचे की ओर खुलता है, तो इट शुड नॉट गिव यू फॉलो थ्रू ऑन द डाउन साइड, which basically means there's a bearish divergence in the hourly chart with a 0 1 2 and all that. तो हम प्ले कर रहे हैं वीकली ईएमए एंड डेली डाइवर्जेंस पे इस बार। फिर हमारे पास है सिंजीन इंटरनेशनल। सिंजीन इंटरनेशनल, यू कैन सी देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस द वीकली चार्ट, राइट। हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, इसका फॉलो थ्रू इस बार मिला था। मंथली सीपीआर के ऊपर है, तो लास्ट टाइम मंथली सीपीआर के ऊपर गया था। अब मैं दिखाता हूँ आपको, लास्ट टाइम S1 से सीपीआर तक गया था, अभी नैरो मंथली सीपीआर है। अगर इसका फॉलो थ्रू ऊपर की ओर जाता है, देन दिस कुड easily go till R1, right, which is this level here. नैरो वीकली सीपीआर भी है, सो अगर मंडे आपको एक गैप अप मिलता है या अच्छी अपॉर्चुनिटी कैंडल मिलता है, देन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आल्सो यू कैन probably try and enter these positions. All right, so again weekly bullish divergence, and there was a daily bullish divergence and at a support level earlier. फिर हम आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन वीकली ईएमए, डेली बुलिश डाइवर्जेंस। हमने ये लास्ट टाइम भी बात किया था, आप देख रहे हो ये तोड़ने की ट्राई कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जो टूट चुका है, क्या ये एसआईपी सीआईपी है, क्या ये ऊपर की ओर जाएगा? सो हमारा प्लान हमने अर्ली चार्ट में बनाया था, विच आई एम गोना एलैबोरेट वंस अगेन और शो इट टू यू वंस अगेन। लेट मी हाइड द सीपीआरस, है ना। इसका हमने प्लान बनाया था कि भाई ये येलो लाइन की अगर ऊपर जाता है एंड सीआईपी देता है, देन वेरी गुड। तो इसको हम, क्योंकि ये यहाँ पे हुआ है, सो हमने यहाँ पे रख दिया, इसको चेंज इन पोलैरिटी के लिए यहाँ रख दिया, तो जो कि हो चुका है ये टेस्ट, ये लास्ट 15 मिनट का कैंडल है। अगर ये गैप अप खुलता है तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट चेंज इन पोलैरिटी नैरो वीकली सीपीआर के ऊपर है, एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट रहेगा, एंड ऑल्सो डेली में हमारे पास ऑफकोर्स बुलिश डाइवर्जेंस एंड वीकली ईएमए बना हुआ है। सो दैट वुड गिव यू अ गुड प्लान। अगेन फॉर मोर क्लैरिटी, आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर रहा हूँ, सॉरी, just so that you can see this. For more clarity, you can wait for the monthly CPR to be broken as well as per hourly charts. You know what to do, guys. You've already been there. ठीक है, सो अच्छा खासा सेटअप है, अच्छा खासा करेक्टिव सेटअप है। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट प्लान ऑल्सो। फिर हम आते हैं अगली स्टॉक पे जो कि है एबट इंडिया। एबट इंडिया वीकली ईएमए पे है, डेली में बुलिश डाइवर्जेंस है और पहला अपटेक हुआ है फ्राइडे को। ऑलराइट, वंस अगेन इफ आई प्लॉट द सीपीआर हियर, आप देखो S1 ऑलमोस्ट S1 के पास से बुलिश डाइवर्जेंस बना है, विच इज अ गुड सिग्नल। एंड नैरो मंथली सीपीआर है, इसके ऊपर जाने से हम एंट्री ले सकते हैं। वीकली सीपीआर भी हमारे पास देखो नैरो ही माना जाएगा। वीकली में भी ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस है, डेली में भी बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड एट वीकली में। सो एबट इंडिया इज अ गुड डिसेंट सेटअप आई बिलीव। फिर हम आते हैं बर्गर पेंट्स पे। बर्गर पेंट्स पे वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, आप देखो यहाँ पे एट अ सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल डेली पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, है ना। एंड मंथली सीपीआर के ऊपर बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कल का कैंडल आपको अपॉर्चुनिटी दे।
वीकली सीपीआर भी नैरो है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, एंड इफ दिस फॉलोज थ्रू देन दिस कुड बी अ डिसेंट सेटअप एज वेल। फिर हम आते हैं हैवल्स पे, जो हमारे पास लास्ट टाइम भी था। हमने प्लान बनाया था कि भाई ये एक ब्रेकआउट हुआ है इन फेब्रुअरी, दिस बिग कैंडल फेब्रुअरी एंड का वीकली चार्ट पे, फिर ये आया चेंज इन पोलैरिटी, अब वीकली चार्ट में इंगल्फिंग बुल बना हुआ है, जो कि यहाँ भी आप देख सकते हो, ये इसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ा था आर्ली चार्ट में। सो लेट मी जस्ट मेक दिस ओनली आर्ली चार्ट, लेट्स सी अगर दिखता हो। अच्छा ठीक, ठीक है, आर्ली चार्ट में आप देखो एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब ऑल यू नीड टू वेट फॉर इज आइदर इट पुल्स बैक टिल द सीपीआर एंड देन गो आउट, और you wait for the prices to close above monthly CPR as per hourly chart, and then you can take a call there also। ठीक है, अच्छा सेटअप है, जस्ट बिकॉज CIP है, क्लासिकल पैटर्न। अभी क्या ये वापस आके यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन देके फिर बढ़ सकता है, एब्सोल्युटली बढ़ सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से प्लान वही रहेगा, हम मंथली CPR के ऊपर इसको इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फिर हमारे पास आता है IOC। नाउ IOC एक लौता, आई थिंक बाकी जो ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स हैं या BPCL, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑल दी एनर्जी स्टॉक्स, इसमें फिर भी थोड़ा सा वीकनेस है। IOC में मैंने इसलिए अलग से रख रखा है क्योंकि वीकली EMA पे डेली में बुलिश डाइवर्जेंस था, एंड ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है आर्ली चार्ट में। मैं आर्ली चार्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन यस इसके सारे पेयर्स जो हैं उसमें वीकनेस ज्यादा है देन बुलिशनेस। इसमें भी एक्चुअली डेली EMA पे बेरिश डाइवर्जेंस था विद अ पुल बैक विच इज 012, यू कैन सी दिस 61.8। इसमें भी आर्ली में एक गैप अप था जो कि एग्जॉस्ट हो गया है एंड फिर ऊपर भी चला गया, सो दिस गैप एक्चुअली बिकम्स इररेलेवेंट। एंड अगर ये नीचे की ओर फॉलो थ्रू देता है तो आप मंथली CPR और नैरो वीकली CPR दोनों को यूज करके इसमें अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं नीचे की ओर भी, बट जस्ट बिकॉज इसमें डेली में बुलिश डाइवर्जेंस था, इसीलिए ये हमने लॉन्ग साइड रख रखा है। ठीक है, सो इसमें भी आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ऑलराइट, देन यू हैव, अब हमारे शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे सेटअप के हिसाब से, ऑफ कोर्स पीपल हु यू नो हियर आई हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको समझा दूं कि हम ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे स्कैन के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटीज है। ऑफ कोर्स एनीथिंग हैपन इन स्टॉक मार्केट, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इसको अपने लेआउट में अपने हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से आप इसको स्टडी करो और डू इट एट योर ओन रिस्क प्लीज। नाउ वी कम टू द शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो पहला स्टॉक आता है ACC का। Now when I look at the weekly chart, of course weekly EMA engulfing bull looks fantastic, hammer के बाद engulfing bull है, इसका follow through हो गया, then also I'm good to be on the buying side, of course, yeah, everyone agrees with me। Now यहाँ पे क्या चक्कर है कि EMA के नीचे जा चुका है पहला ये sell after series of bearish divergence on a daily chart, ठीक है, then this is the first pullback till the EMA। Now at EMA you can see we have a bearish divergence and a very good one on that, है ना, बहुत अच्छा बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है एट मंथली CPR। सो इफ इट गोज बिलो द वीकली CPR व्हिच इज आल्सो बिलो द मंथली CPR, आई थिंक आई वुड बी टेम्प्टेड टू टेक अ शॉर्ट सेल ट्रेड हियर। Excuse me, now I'm just making bigger so that I can probably draw some resistance zones also। ऑलराइट, सो अगर ये नीचे की ओर टूटता है WCPR के नीचे, then I'll be tempted to take a position on the downside, है ना। सो ACC सीम्स लाइक दैट, बट ऑफ कोर्स अगर वीकली फॉलो थ्रू, अगर इस लाइन के ऊपर चला जाता है, मंथली CPR के ऊपर चला जाता है, देन आई एम ऑन द बाइंग साइड, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज आई थिंक दैट ये बेरिश डाइवर्जेंस विद द ट्रेंड होगा, फिर ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस बनाएगा डेली में, एंड देन इट विल सेट अप फॉर द एंटायर थिंग, आई थिंक दैट शुड हैपन, बट अगेन we'll see what happens on Monday। बैंक ऑफ बड़ौदा वीकली चार्ट हैमर था, फॉलो थ्रू भी आ गया है, एंड डेली चार्ट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना देर गिरने पे, डेली डाइवर्जेंस था, यहाँ पे गिरा बहुत जोरों से। नाउ पहली बार EMA पे आया है, एंड यू ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेरिश डाइवर्जेंस फॉर अ री एंट्री ट्रेड। मंथली CPR के नीचे रहेगा, अगर ये गैप डाउन खुलता है देन फैंटास्टिक बिकॉज वी हैव नैरो CPR, अगर इसके नीचे जाता है देन यू कुड गेट अ गुड ट्रेड बिकॉज लुक एट द डाइवर्जेंस हियर आल्सो, वी हैव वन इन द RSI एंड MACD, है ना, एंड लुक्स लाइक दिस कुड come and give you a trade till here, feels like anyway। All right, so that is why this is in the list।
ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स है जो डेली ईएमए एंड आर्ली बेरिश डाइवर्जेंस पे है, वो आप जरूर, इफ यू आर अप फॉर इट, देन यू शुड डेफिनेटली go and test it, check it, scan it, and I think end of Monday will give you more clarity in what direction we should go for. बीपीसीएल जैसे मैंने बताया था कि बाकी स्टॉक्स भी ऐसे ही सेटअप है जो डेली ईएमए, देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस हियर विद अ 012 इन द अर्ली चार्ट, नैरो डब्ल्यूसीपीआर अगर इसके नीचे खुलता है या नीचे गिरता है, then there's a good opportunity that you can take this on the short side. All right, so I'm just going to remove these lines. नया से अब बनाते हैं, इसके टारगेट्स हो गए थे हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स, है ना. So this here is what I'm saying. If it goes below the WCPR, which is also below the MCPR, this could give you an opportunity. Candles are also on the weaker side in the daily chart. Okay, so this is BPCL. Then you have Coal India. Coal India में आप देख सकते हो वही EMA पे है, weekly chart, no doubt about it, but there is no bullish divergence. In fact, after a good fall, this is the first time it's gone back up till the EMA, and you're looking for a bearish opportunity. ट्रेंड लाइन भी आप अर्ली चार्ट में देखो, ये इतना अच्छा ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हुआ है, फिर ये गया टेस्ट करने, एंड देन देयर इज अ बेरिश पैटर्न. नाउ बोथ द सीपीआरस आर नैरो, सो इफ इट गोज बिलो दैट, अ गैप डाउन और समथिंग वुड गिव यू फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक my alert could be changed to now below MCPR somewhere here. Okay, then we come to Hindustan Petrol, sorry. Again at EMA, but no bullish divergence. So it is possible that this comes back to test these lows to create that bullish divergence before it starts going up again. All right. So uske liye at EMA hai, bearish divergence hai in the hourly chart also with the 012 pullback. Right. Looks good. And if it goes below the CPR, it is already below monthly CPR, the new one. It is also below it will also go below the weekly CPR, and that'll give you a good trading opportunities as well. Okay, then we have now this is all about it. Like I've got about 17 stocks here. I think 17 stocks that are in your purple list up for good scanning. अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टॉक से, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उन स्टॉक से बात करते हैं. मीनवाइल आप सारे स्टॉक्स के नाम लिख दो जो आप चाहते हो मैं आपके लिए देखूं, मैं उसको भी देख लूंगा इसके बाद, एंड फिर फाइनली हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे. All right. So for this purpose, I'm going to switch to a two layout where I've got a monthly chart and a weekly chart. All right, guys. So if you're up for it, please type BIO. Let's do this. Let's do this, guys. Finally, end of month analysis हमें करना है, and हमारे पास लगभग 15 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है. All right, so now I have a monthly chart on my left hand side and a weekly chart on my right hand side. पहला स्टॉक हमारे पास है SDBL. ठीक है, SDBL में आप देखो यहां से शुरू हुआ था मंथली बुलिश डाइवर्जेंस से, टाटा वेंट अप. First time it came back here, and second time now this is a very good, it feels like a very good retracement, right? Look at the wicks on the downside, very good retracement. And यहाँ पे हमारे पास triple bullish divergence बना हुआ है in the weekly chart. So this is one stock that I think is looking good, like in terms of re-entry opportunities. Of course हम इसको अगर डिटेल में बात करेंगे तो डेली में फ्यूचर एमसीपीआर यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आपको मंडे को एक decent कैंडल दे दे, हैमर डोजी व्हाटएवर, engulfing bull, piercing pattern, whatever it is, यहाँ पे दे दे जो ये सजेस्ट करे कि हाँ प्राइसेस ऊपर की ओर जाएगा, then you could probably enter. Then if you're not very fussy about entering at very low prices, I think you can also draw like a point of interest which is somewhere here, this zone. अगर इस zone के ऊपर जाता है, then this is fantastic. You can see how good that would be. Okay, so that is the plan for SDBL. Now, next stock we have is Hester Biosciences. All right, now Hester Biosciences में आप देखो मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है, जिसका मतलब अभी पहली बार अपटिक हुआ है. लास्ट टाइम अपटिक हुआ था शूटिंग स्टार के साथ, एंड हाई नहीं टूटा. एक्सक्यूज मी, दिस टाइम अपटिक हुआ है,
एंड वी नीड द प्राइसेस टू ब्रेक द हाई, राइट, दैट इज द कंफर्मेशन। तो वहां पे देखो आप अलर्ट लगा हुआ है। वीकली में भी बुलिश डाइवर्जेंस है, नॉट द बेस्ट बट है, बट मंथली में तो है ना। सो मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है, फेयरली न्यू स्टॉक, नॉट वेरी ओल्ड, एंड वी कैन प्रॉब्ली यूज दिस एज वेल। फिर हमारे पास आता है व्हील्स इंडिया, है ना। व्हील्स इंडिया आता है जहां पे आप देखो प्राइसेस यहाँ से मंथली बुलिश डाउन से ऊपर गया, फिर ईएमए पे आया, फिर ईएमए पे हमें अपॉर्चुनिटी दिया, ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर वीकली में वापस बुलिश डाइवर्जन बनाया, ऊपर गया, फिर ईएमए पे आ रहा है, और यहाँ पे वंस अगेन एट मंथली ईएमए वी गॉट अ बुलिश डाइवर्जेंस इन व्हील्स इंडिया। ठीक है, सो पीपल हु वांट टू एंटर ऑन वीकली बुलिश डाइवर्जेंसेस, आई थिंक एसडीबीएल, व्हील्स इंडिया, दीज आर डिसेंट स्टॉक्स। यू कैन सी ट्रेलिंग हाइज हुए मंथली चार्ट में, आप उसको यूज कर सकते हो। आप डेली चार्ट में जा सकते हो, डेली चार्ट में मंथली सीपीआर को यूज करके भी ट्रेड किया जा सकता है, डेली में बुलिश डाइवर्जेंस भी है। ठीक है, हम जल्दी से एक बार पिछली स्टॉक हेस्टर बायोसाइंसेस का भी मंथली सीपीआर देख लेते हैं। हाँ, नो पॉइंट, ठीक है। फिर हम आते हैं एस्टेक लाइफ साइंसेस में, मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है, पहला अपटिक इस बार है, इसका हाई टूटने से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। वीकली में सेंसर डाइवर्जेंस है, वेल शेडी बट यस। सो आप इसको फिर डेली चार्ट में जाके एक मंथली सीपीआर लगा लो, मंथली सीपीआर के ऊपर है, अगर ये आपको फॉलो थ्रू देता है ऊपर की ओर, देन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल। ठीक है, सो दिस इज इन द लिस्ट बिकॉज यहाँ पे मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस है। देन वी कम टू डेनोरा इंडिया। नाउ डेनोरा इंडिया ऑफ कोर्स इट्स गॉन अप, ईएमए अप, अगेन ईएमए। नाउ ईएमए पे आपके पास bullish divergence है वीकली चार्ट में, and if this can be called a 012 also because of the retracement to 78.6%. नाउ यहाँ पे हम इसको गैप बना देते हैं, है ना, एंड इसको अगर फॉलो थ्रू होता है देन वी कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हेन वी गो ऑन टू द डेली चार्ट, हम देखते हैं डेली चार्ट में एमसीपीआर कहाँ है, एमसीपीआर यहीं पे है जहाँ पे कल बंद हुआ होगा, अगर इसके ऊपर जाता है देन वी कैन टेक द अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स इफ यू आर यूजिंग द सीपीआर्स, जस्ट use switch on the CPR and see if the stock really follows the CPR well, and only then use them. ठीक है, all right. Now the next stock we have is escorts. Now escorts में ये है कि आपके पास फ्यूचर्स भी है, तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको फ्यूचर में भी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। फ्यूचर्स यहाँ पे मंथली ईएमए पे है, वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस था, ये हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, एंड हमने एक सेटअप बनाया था, सो अभी भी बुलिश डाइवर्जेंस कायम है। नाउ व्हेन वी कम टू द डेली चार्ट, हमने ये प्लान बनाया था इस स्टॉक के लिए, एक ट्रेंड लाइन बनाया था, हमने बोला था अगर ये टूटता है, चेंज इन पोलैरिटी देता है, तब हम इसको एंटर करेंगे, और ये हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। नाउ इवन नाउ द प्लान रिमेन्स द सेम। नाउ ऑफ कोर्स वी गॉट दिस लाइन एज वेल, ये जो नीचे वाला लाइन है ये भी है, जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ द बेस्ट थिंग टू डू हियर इज इफ इट गोज अबव द मंथली सीपीआर वी कैन प्रॉब्ली यूज एन एंट्री लेवल देयर। अगर हम इसको सीपीआर प्लॉट करते हैं, आप देखो ये सीपीआर अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, सो यू कैन ऑल्सो यूज द सीपीआर हियर एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रिक्ट विथ योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, सो द प्लान स्टिल रिमेन्स द सेम, अभी भी मैं खाली इसको यहीं शिफ्ट करूंगा ऐसे। सो इफ इट kind of goes above the monthly CPR, then should break the trend line. If it breaks the trend line, then we can use the change in polarity retest wala system till this level, and then of course if it breaks this, it can go higher as well. इसके बाद हम आते हैं एवर रेडी इंडस्ट्रीज। एवर रेडी इंडस्ट्रीज आप देखो मंथली ईएमए पे है, वीकली और दिस डेली चार्ट, थैंक गॉड, आई वाज लाइक वंडरिंग व्हाई इज इन द लिस्ट। वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड लास्ट वीक दैट फिनिश्ड गेव अस अ टिक अप। ठीक है, सो मंथली ईएमए, वीकली बुलिश डाइवर्जेंस। नाउ वी कम टू द डेली चार्ट, एंड डेली चार्ट में आप देखो देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर व्हिच वाज सपोर्ट लेवल ब्रोकन। अगर ये चेंज इन पोलैरिटी हुआ देन आई थिंक इट विल नॉट गिव यू अ ट्रेड, otherwise I think the best case scenario is if it kind of breaks this point of interest, gives you a retest and then goes higher. Okay, तो ये इसके ऊपर होके जाके बंद होना जरूरी है, तो अभी तो है ही नहीं, मंडे आप अगर होगा या ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, जब भी होगा तभी हम इसको इसके बारे में बात कर सकते हैं, या इसको ट्रेड ले सकते हैं, या इन्वेस्ट कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज। राइट, देन वी हैव ग्रेविटा इंडिया। नाउ ग्रेविटा इंडिया मंथली ईएमए पे है,
वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है एंड देयर इज अ गुड कैंडल, दीज आर गुड वीकली कैंडल्स, है ना। देखो इंगल्फिंग बुल बना, फिर उसका फॉलो थ्रू हुआ, ये भी ऊपर चला गया। अब अगर हम इसको डेली चार्ट में लगाएंगे तो आप देखोगे पिछला एमसीपीआर जब हम लगाते हैं तो ये S1 के अंदर घुस गया और सीपीआर के ऊपर भी चला गया। नाउ वी हैव अ वाइड मंथली सीपीआर, so it is probable, it is possible that this could come and test this to create a head and shoulder. मैं आपको दिखाता हूँ what do I mean by this. So I've got a shoulder here, this is my head. So what I mean by it is, so this is my shoulder, this is my head, this could come back, test this monthly CPR somewhere here and create another head and shoulder, something like this. ठीक है, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स इट इज जस्ट एन अजम्पशन बिकॉज द वाइड एमसीपीआर, आई थिंक इट इज वेरी, बहुत ट्रेंडिंग होना टफ हो जाएगा इमीडिएटली, है ना। लेकिन वीकली में और मंथली में सेटअप अच्छा लग रहा है, तो अगर ये थोड़ा सा बेंड नीचे होता भी है तो हमें अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा, वरना थोड़ा रिस्क ज्यादा रह जाएगा इस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ट्रेड में। फिर हम आते हैं इंडिया मार्ट इंटरनेशनल में, जो हमने पहले भी बात किया, अभी भी हम उसी उसी स्टेटस पे हैं कि मंथली ईएमए पे है, वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है। यहाँ पे क्या ये 012 था, अभी तक लग रहा है ये अच्छा खासा यू नो एक रेंज में चल रहा है, एंड आई थिंक इट्स गोना ब्रेक आउट इफ व्हेनेवर इट डज, आई एम गोना गो एंड स्टेप इन इफ यू आर नॉट ऑलरेडी इन। अगर आप ऑलरेडी इन हो एक 012 काइंड ऑफ सेटअप पे, देन वेरी वेल। यहाँ पे एक मंथली सीपीआर है, इसके ऊपर रहना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स नाउ वी हैव अ रेंज। अगर इसके ऊपर टूट जाता है, अगर इसके ऊपर चला जाता है, then it's going to be fantastic. Now of course one more thing can happen, you need one day for a breather. अगर ये सब चार्ट्स को ऊपर जाने हैं तो आप ध्यान देना, आपको एक कैंडल मंडे का ऐसा चाहिए जो आपको बताएगा हाँ ये फॉल बंद हो गया, मतलब ये दो ब्लैक कैंडल्स अब खत्म, अब नाउ बुल्स आर गोना कम बैक। सो दैट कैंडल कुड बी मंडे, ट्यूसडे, और इफ इट हैज टू गो अप, अगर इसको ऊपर जाना है तो वो होना जरूरी है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, इंडस इंडस इन बैंक। इंडस इन बैंक हमारे पास मंथली ईएमए पे है, डिसेंट एंडिंग ऑफ द कैंडल इज वेल, एंड वीकली में देयर इज अ वेरी शेडी डाइवर्जेंस, बहुत छोटा सा एक डाइवर्जेंस है, आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स नॉट द बेस्ट बट है तो सही, राइट। एंड लॉट ऑफ विक्स एट दिस लेवल which basically means ये सब प्राइसेस बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, बुल्स बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको एंटर करने के लिए हम डेली चार्ट में जाते हैं। डेली चार्ट में ऑफ कोर्स इफ यू नॉट ऑलरेडी एंटर्ड, वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस तो था ही। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप यूज कर सकते हो बिकॉज सीपीआर थोड़ा सा वाइड है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ब्रॉडर मार्केट भी ऊपर रहेगा, तभी ये शायद ब्रेकआउट होगा। अगर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाने के लिए तैयार है, देन इसका मतलब आपकी इंडेक्स भी ऊपर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। इफ आई गो टू द अर्ली चार्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू द अर्ली चार्ट बिकॉज यहाँ पे आपको और क्लियरली ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, राइट। दिस कैन बी, आप अपने परमानेंट लिस्ट में इसको रख लो देखने के लिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर की ओर या नीचे की ओर, आइदर वे यू कैन प्रॉब्ली टेक इट। नीचे की ओर कम चांस है अभी तो फिलहाल, unless something happens, unless something changes. It is only if it breaks on the upside you get something. अगर मंडे ऊपर जाके रिजेक्ट होता है, यहाँ पे कुछ बेरिश बनता है, then we'll talk about it later. But monthly EMA, weekly divergence, I think is a decent setup. Excuse me. Then we come to, guys, just a reminder, कोई भी और स्टॉक आप चाहते हो मैं देखूं, आप प्लीज यहाँ पे लिख दो। Then we come to Praj Industries. Praj Industries again you can see at monthly EMA decent candle, doji था इस बार, अच्छा खासा white hammer बना हुआ पड़ा है, and weekly में bullish divergence with a nice uptick and a nice, well not so nice follow through, but yes you can see it happening soon. Now daily chart में आप देखो monthly CPR थोड़ा सा wide है, but आप यहाँ पे point of interest फिर भी बना सकते हो, है ना। So this is like the follow through that we are talking about. So maybe यहाँ पे एक मंडे एक अच्छा सा आए और कुछ नहीं करे, और ट्यूसडे को फिर एक फॉलो थ्रू देखो, आपको ट्रेड दे दे, है ना। सो दिस इज व्हाट टॉकिंग अबाउट, लाइक दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आए कुछ कुछ ना करे ज्यादा, एंड देन फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। ओके, सो प्राज इंडस्ट्री अगेन वीकली बुलिश डाइवर्जेंस एट monthly EMA. Then we come to
Kotak Bank. Now Kotak Bank, once again, it's of course it's in a sideways zone. Excuse me, a bad throat today. You can see it's like almost consolidating in a rectangle, but it does have a monthly bullish divergence. ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है कि नहीं पता नहीं, बट अगर ये कंसोलिडेट अभी भी कर रहा है तो ये इसका अपॉर्चुनिटी या इसका सजेशन ये रहेगा कि ऊपर की ओर जाने की प्रोबेबिलिटी है. नाउ इफ आई शिफ्ट टू अ डेली चार्ट, है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसके ऊपर है, मंथली सीपीआर के ऊपर है. तो अगर जब तक ये मंथली सीपीआर के ऊपर है, ये लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी. नाउ रिमेंबर दिस, अगर ये मंडे खराब कैंडल बनता है, यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन जाएगा. सो यूल बी अ लिटिल केयरफुल एंड नॉट टेक अ बाइंग ट्रेड. बट अगर गैप अप खुलता है या इवन टिक डाउन होके फिर घूम जाता है ट्यूसडे को, देन इट इज स्टिल ओके. हम इसको एक बार आर्ली में चेक कर लेते हैं, बिकॉज कोटक वी कैन एक्सक्यूज मी चेक द आर्ली चार्ट ऑल्सो, राइट. सो आर्ली चार्ट में भी देख रहा है बहुत सुंदर ट्रेंड लाइन था, ये ब्रेकआउट हो गया है. And we've got the black zones. I know it's a little cluttered, but please I apologize for that. Please bear with me. That's your weekly CPR, which is narrow, and monthly CPR somewhere here near the zone. So this looks all right, right? So monthly bullish divergence, weekly at the edge of a rectangle, and prices ऊपर जा सकते हैं. फिर हम आते हैं वी मार्ट पे. वी मार्ट में भी बुलिश डाइवर्जेंस है, ऊपर गया, फिर एक डिप लिया, फिर यहाँ पे एक अगेन बुलिश कैंडल बनाया है. सो विच इज ऑल्सो अ गुड साइन. नाउ लेट्स जस्ट चेक इट, कितना रिट्रेसमेंट हुआ है, 61.8 के आसपास. इन द वीकली चार्ट वी हैड अ सेंसर डाइवर्जेंस, ऊपर गया, इट पुल बैक आया, which is 61.8, and then you're expecting the prices to go at least till here. ये हमने बहुत पहले भी बात किया था कि हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए ऐसा कुछ करे, यहाँ तक आ सकता है, एंड देन अगर इसको ब्रेकआउट दिया, देन ऑफ कोर्स द प्राइसेस कैन गो हायर. अब इसके लिए हम डेली चार्ट में आते हैं. डेली चार्ट में मंथली सीपीआर इज नॉट सो नैरो, बट एट द स्टार्ट ऑफ 012 यू कैन सी देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर. ये स्टार्ट हो चुका है. मंथली सीपीआर को आप बेस लेके चल सकते हो. अगर आपको यहाँ टेस्ट मिलता है, विच इज लाइक इट गोज अ लिटिल लोअर एंड देन गोज हायर, good for you. But again, it seems like these could be the levels it can come till, and then maybe the entire monthly divergence and everything can play a role for this particular movement in the stock. Okay, ठीक है. So V Mart का भी प्लान अच्छा ही लग रहा है. ठीक है. रेस्ट ऑफ दिस यू कैन सी द बिग लिस्ट हियर विद, जो अभी तक उतना अच्छा नहीं सेटअप दे रखा है, सो वो नीचे है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी. फिर हमारे पास वेस्ट लाइफ है, विच इज अगेन ब्यूटीफुल, बिकॉज यू कैन सी ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया. सो हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं. यहाँ पे अगेन ये ईएमए तक आया है, यहाँ पे ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस है हमारे पास. वेल, बुलिश डाइवर्जेंस है हमारे पास वीकली चार्ट में, विच इज अगेन अ गुड साइन दैट इट माइट स्टार्ट गोइंग अप अगेन. डेली चार्ट में भी एमसीपीआर के ऊपर ही रहेगा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो हायर एज वेल. सो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ऑल्सो सीम्स लाइक अ डिसेंट पिक फॉर अ री एंट्री अपॉर्चुनिटी. फिर हमारे पास है BSHS, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, जो कि पहले अगस्त 22 के आसपास 30-40 रुपीज था, ऊपर गया 664 तक, एंड फिर वहां से करेक्शन आया, पहली बार ईएमए पे आया, मंथली ईएमए पे. यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मैं बना देता हूँ. ठीक है, सपोर्ट लेवल पे ये एक रिजेक्शन कैंडल विच इज अ हैमर, तोड़ने का ट्राई किया लेकिन नहीं ब्रेक हुआ. एंड देन यहाँ पे we've got a bullish divergence in the weekly chart also, which suggests that the prices might recover from here. Then if I go to a daily chart, see, it looks like a false breakout here, and we can use the monthly CPR. Now if you want to use the monthly CPR, एक बार हम प्लॉट करके देख लेते हैं क्या ये फॉलो करता है. तो मेरे ख्याल से हाँ कर ही रहा है. लास्ट टाइम जब ऊपर गया कोई वॉल्यूम नहीं होता था, तो ऑफकोर्स it seems like it was just one of those stocks जो I don't know if I call it operator based, or it has no volume, so it basically just going up for no reason. And of course it has consolidated till the support level here. Now if it starts going up again, you can probably jump in, if but do your fundamental analysis in this one, just because ये जो last जिस तरीके से बढ़ा था, ये हर समय नहीं होता ऐसा, और अगर it is not manipulated, then it will show it in your fundamental analysis also. Okay, so Bombay Super Hybrid Seeds is something that you should keep in your list also. But of course, choose the best one, choose the ones which work for you,
And it's a good practice to do a little fundamental analysis if you're entering one of these green list stocks. All right. Now I've got few stocks here from you guys, which is, so I'm going to look at those three before I go on to Nifty and Bank Nifty. So I've got Polycab India, blue mein hai. So I think, Gagan, if you shared Polycab, I think this is weekly and daily setup, right? मैं अभी भी उसी उसमें हूँ. I think I still have this plan ready. So if I open, just give me a second. I'm just going to open weekly and daily here. So yeah, the plan is still the same. जो पहले था, मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि हमने पॉलीकैब लिया था, जो हम यहाँ पे निकल गए थे बिकॉज यहाँ पे सीपीआर पे आर्ली चार्ट हिट करा था, और जब भी मंथली सीपीआर के ऊपर रहेगा तो सेलिंग शॉर्ट इज अ लिटिल टफ कॉल टू टेक. So we took a call here below the WCPR, but we got out here because it's at support level 1. Second, it's also at MCPR. फिर यहाँ से ये बहुत बड़ा jump ले लिया. So now the plan is still the same. You know, there's a series of divergence in the RD chart. Daily chart में जब हम आते हैं तो आप देखो अभी भी, if I draw this gap down, why is it not showing here? ठीक है, अच्छा गैप के तो ऊपर चला गया ये. So अभी भी यहाँ पे एक टिक डाउन, अगर मंडे का कैंडल खराब होगा तो एक टिक डाउन से ये खराब हो जाएगा. एंड मंथली सीपीआर भी नैरो है, S1 यहीं पे, R1 यहीं पे. सो इफ इट गोज बिलो दिस, which is also in our favor because we would like to sell below the monthly CPR only. All right. So if it goes below this, then only I'm, looking to sell this if possible. Weekly, आप देखो ये wick candle था, ये वाला candle is not so good, not so bad. There's nothing good or bad about it. But yes, that would be my plan, to be honest. Let me open the daily chart here. इसमें drawing किया हुआ रहेगा, yeah. है ना? So I'd like a Monday को गिरना तो take down होगा, then follow through and all that. But otherwise, till then, we are not entering this selling trade. Then I have Sula. I think Sula is a long-term monthly time frame ka analysis. So let's open monthly chart first. Monthly at EMA. Let's look at weekly chart. Weekly is also at EMA. All right. So this started from here. That's not a bullish time, but yes, understandable. Went up, corrected till EMA. Bullish Harami last time, I think. Or anyway, a bullish candle and then doji now. अब इसको daily में खोलते हैं. And daily chart, let's remove the the MCPR. May bullish divergence है, and it's, yeah, so I think it's, if it goes high above this, at least ये gap तक, so this looks okay. If you ask me, this looks okay. Like I don't have a problem with this stuff. यहाँ तक तो आ सकता है because of the divergence, but of course it needs to give you like a Monday gap up, yeah, a bullish follow through on the upside would be a good sign. Sula looks okay. Oh, do you want me to look at daily hourly? Just a sec. I'm opening daily and 1 hour. So daily hourly के हिसाब से, I think divergence was here, entry was here, somewhere here, 530 के और levels, ये WCPR के ऊपर. अभी भी narrow CPR है, इसके ऊपर जाता है, then yes, as I said, it looks okay. You know, अगर इसको मैं monthly CPR भी plot करता हूँ यहाँ पे future pivots, ये वाला black line, this is my monthly CPR somewhere here. So जब तक इसके ऊपर है, it looks okay. ठीक है, but as per like a daily hourly, I think entry was a little earlier in Sula. Then we looking at AppTech. It's in the pink list, so that means I'm waiting for something. So let's see monthly chart. On my left hand side and right hand side में weekly chart है. Yes, it did have a 012 as well. Very small one, but yes. AppTech में monthly में hammer है, yes. At EMA वाला setup है. This looks, you're correct about it. AppTech में है. Weekly में bullish divergence है, uptick है, and there is, well, not much of a follow through. But अगर मैं इसको daily chart में डालूंगा, मैं इसको pink में क्यों डाला? क्योंकि I would like to see it again next week. And I think my point of interest being this level. So if I'm interested in a weekly and a monthly chart in this particular stock, then I'm interested in the monthly high being broken. So let's put an alert here. In fact, chalo.
ये भी कर लेते हैं, है ना। मंथली सीपीआर के ऊपर रहेगा. आई वांट समथिंग टू हैपन हियर फर्स्ट एंड देन काइंड ऑफ ब्रेकआउट अबव दीज लेवल्स फॉर एनी काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन. ठीक है. once that happens, then I'm interested in Aptex. So that is why it's in the pink list. PEL ये भी पिंक लिस्ट में है. तो अगेन पीएल में अभी भी वही प्लान है. आपके सारे ईएमए पे इट्स कंसोलिडेटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन. नाउ एज आई सेड लास्ट टाइम, मंथली बर्ड यहाँ पे बना तो था, लेकिन रिट्रेसमेंट अब जाके पहली बार ये महीना 61.8 टच हुआ है. ठीक है. सो नाउ द पॉसिबिलिटी of this going up is higher, but at the same time वीकली एक वीक अच्छा होना चाहिए. मतलब अगर आज का वीक अच्छा होगा, द कमिंग वीक, then we'll have a bullish divergence here and we can probably take trades. All right, but point of interest still being this. But अगर अपटिक होगा, I think I'm gonna use it for an opportunity. अब डेली चार्ट में अगर हम देखें तो आप देखो, इट इज नॉट, जब तक ये यहाँ पे है ना, इट इज नॉट गिविंग यू अ स्पेसिफिक ट्रेंड. So one, unless it gives you a specific trend or goes above the monthly CPR, I think it is best to say that I would enter above this horizontal line that I've drawn here. ठीक है. That would be the plan at the moment, at least till I get a like a tick up here or something. तो एक तो टिक अप होना जरूरी है और बाकी भी सब कुछ होना जरूरी है. NMDC. NMDC monthly candle is not that great और बड़ा भी बहुत जोरों से है. So if you can see, I mean point of interest यहाँ पे कहीं पे है तो यहाँ तक आ सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है. वीकली चार्ट में सेंसर डाइवर्जेंस तो एट ईएमए आया, बट एट ईएमए कंपेयर टू द ब्लैक, ये दिस बिग ब्लैक कैंडल, देयर इज नथिंग, राइट. सो इट कैन spend some time here. Now let's look at the daily chart. Yeah, so daily chart had a series of bearish divergences here with a 012 fall. This could correct till this MCPR, give you another like kind of a test here. So create shoulder, head goes up, creates another shoulder, and then maybe it does something. So यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा ये. I think use monthly CPR or bearish divergence re-entry trade on the daily and hourly chart. Excuse me, that would be my plan. है ना. For NMDC. अतुल. अतुल वी गोटा वेट यार. अनफॉर्चुनेटली दिस इज अपटेक, फॉलो थ्रू भी हुआ लेकिन ये नीचे चला गया. आई थिंक सिमिलर टू अल्काइल अमीन्स एज वेल. सो आई थिंक आई हैव गॉट दिस लाइन हियर. जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, आई एम you can probably look to hedge your positions or sell some of it and sell some futures here. But अभी बेच भी नहीं पाओगे because it is far away from EMAs. So just I think there's no option. Like अगर next month अच्छा होता है, then only there's something good about it. Otherwise, this might correct, which I mean by the looks of it. Hind Copper. Hindustan Copper monthly looks all right. Weekly, it's at EMA, sure, but spending some time there. Like it's consolidating. So daily chart में एक बार जाते हैं. I don't know. I don't see anything apart from like a resistance level here. इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है. So and यहाँ पे daily में bearish divergence भी है. So if it kind of goes lower, I won't be surprised. एक बार मैं लेफ्ट वाले को वीकली कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए. हाँ, वीकली में भी आप देखो. So I wouldn't be surprised if it kind of falls a little lower. Maybe MCPR तक, maybe lower. I don't know इसका hourly CPR कैसा है, देखते हैं. नैरो ही है तो मे बी इसके नीचे जाके yeah, I wouldn't be surprised if it does that, like falls a little lower. रेन इंडस्ट्रीज मैंने आज ही इसको शायद पिंक में ट्रांसफर किया है. लेट्स सी रेन. यस, पिंक में ट्रांसफर किया है. सो रेन इंडस्ट्री सिमिलर थिंग. लाइक इफ यू गो टू द मंथली चार्ट वंस अगेन, है ना. तो मंथली में इसको मैं वीकली कर देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. So yeah, I mean series of divergences, but as I said, breakout हुआ, फिर वापस trend line के अंदर घुस गया. So looks a little dodgy, but I think what we can do is we could probably draw like a this zone here. Maybe इसको भी हटा सकते हैं, नीचे वाला को false breakout बना लो.
and we hope that this doesn't go down, yeah, like below this level, hopefully. है ना, if the fundamentals are okay, I think this should maybe एक हफ्ता और अच्छा बन के ऊपर अगर चला जाए, then maybe this will turn around. So some of these stocks like Atul, Alkylamines, Rain Industries, इनमें ये सब problems आया है कि confirmation देके पहली बार a lot of these stocks monthly divergences fail हुए. All right, let's do a last one, Eicher Motors. Eicher Motors monthly, weekly, you want me to look at daily, hourly, I believe, right? Daily divergence. So entry was here on 20th March. Up, I think if I open an hourly chart, I think it's at a gap, right? Abhi, I wouldn't do anything about it. It's at a point of interest in an hourly chart, and कोई ऐसा setup नहीं है मेरे ख्याल से अभी immediately तो. All right, so I don't know if I would do anything about this Eicher right now. जो हो गया पहले था, यहाँ पे था, but अब शायद नहीं. All right, guys, let's do Nifty Bank Nifty quickly. So Nifty मेरे पास left side में है. So let me just hide these CPRs. Gonna be a little tricky. Future pivots. This is monthly. That's fine. है ना, so ये मेरा नया future है. But let me start with the monthly chart. So Nifty का monthly chart is not a problem. ठीक ही लग रहा है. There's no bearish candle. And I'm looking at a spot chart, guys, by the way, because of the expiry and everything. Excuse me. Weekly chart, however, you can see I'm just going to hide this CPR thing right now. Weekly chart में यहाँ पे bed था, censored. It come back to test it. All right. Now, is it just a test or is it divergence done and dusted? We're going to find it later next week. Daily chart में भी यहाँ से it's gone back to test this level. And you can see all the indicators, right? They're all lower. Which basically suggests that if hourly chart में अगर आप देखो, if this is a point of interest, अगर ये यहाँ या तो ऊपर जाके फिर गिरे या यहाँ से ऊपर जाके gap down करके अगर गिरता है, then this becomes a little more interesting on the downside. Upside कितना है क्या है ये मुझे नहीं पता क्योंकि कोई divergence से start नहीं हुआ है. So we can use the CPR strategy that we was talking about. So if we plot the future pivots here, which is I want. This is your monthly CPR. So अगर इसके ऊपर जब तक है आप WCPR को यूज करो जैसे हमने बात किया था लास्ट टाइम, and this being an important point of interest. Okay, so be careful here. Okay, so there's no, like, I think I'll spend next week to find out about what's going to happen for the next of the month. ठीक है, मैं अगर फ्यूचर का चार्ट खोलूं तो इसमें थोड़ा सा आपको ये दिखेगा that breakout and then ये टेस्ट हो रहा है. Also ये एक वीकली चार्ट में फ्यूचर चार्ट अगर आप देखोगे, so this was a bearish divergence and this could be a retest, could be. Now again it all depends how it's going to be on Monday, कैसे खुलता है ये. ठीक है, so if it goes below the monthly CPR, I think I'm going to use weekly CPRs to take a short sell position here in the future chart. All right, this doesn't seem like the Thursday candle doesn't seem like the best candlestick formation that I have right now. फिर हम आते हैं बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी का भी ये एक स्पॉट चार्ट है. आप देखो ये एक रेंज बना हुआ है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट. मंथली चार्ट ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड आप देखो ये स्पॉट का चार्ट है. इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग. रेंज इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. सो एनी टाइम नाउ इट्स आइदर गोना ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड, राइट? Divergences still exist. Candles is not the best. shooting star टाइप का बनाया हुआ है. वीकली चार्ट में अगर हम जाते हैं तो आप देखो यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, एंड आई थिंक मुझे पहले लगता था कि अगर ये यहाँ तक एक और स्पाइक दे दे और बेरिश डाइवर्जन दे दे देन इट वुड नथिंग लाइक इट, इट्स अ परफेक्ट सेटअप. बट वो हुआ नहीं था. ये ऐसा फॉल आ गया था. अभी भी अपॉर्चुनिटी है बट दिस इज नॉट द बेस्ट सिचुएशन राइट नाउ. तो उसको फिर जज करने के लिए हम डेली चार्ट में जाते हैं. डेली चार्ट में हम देखते हैं यहाँ कि ये भाई अच्छा कैंडल बना तो था लेकिन let me just shift this here, sorry. अच्छा कैंडल बना तो था लेकिन
there is no opportunity here apart from the early bullish divergence. And that also very shady, you know, ऊपर नीचे करके finally Friday को, I think it gave a Thursday को, it gave a nice move. But again, there's a point of interest. That's a resistance. That's a false breakout. Came back again at resistance. या तो ये इसके ऊपर जाए, you know, which is also above the monthly CPR. Monthly CPR here is a narrow monthly CPR, which is a good sign. Last time I think sub single line thing. So this could give you an opportunity as well. Simple system. The problem here is the early bearish divergence also, which is not the strongest of the divergence, but है तो सही. ठीक है. So मेरे हिसाब से I think Monday हमें थोड़ा सा शांत रहना चाहिए. Maybe हमें थोड़ा सा और clarity मिलेगा in terms of what to do next. Which direction should I trade next? ठीक है. Future chart एक बार खोलते हैं. Right, that's your resistance level. Came back. This is a loner, right? You see, this is higher khula lekin doji. There's no strength to that candle, which is not the best sign. No bearish divergence here, of course, in the early chart. अगर ये gap down खुलता है ना इस zone के नीचे, इस zone के नीचे, तो there is a problem. All right, then there is a problem. It goes below the monthly CPR also, which is narrow. So we're gonna see what to do about that. Or I think we'll spend Monday judging that. I think it's a little too early. मैं कुछ भी बोलूँगा, it'll be like a half-hearted thing about Nifty Bank Nifty, to be honest. And on this time frame, I don't know why 2 hour खुला हुआ है, sorry, 1 hour here. Okay, let me go back to spot. I think हमने 2 hour का chart देखा था. हाँ, there's no bearish divergence, correct, but it is at resistance. Okay, so that is, I think, for index. Maybe we wait for Monday to give us more clarity. I think we'll otherwise we'll just be double guessing everything. ठीक है. I think that's about it, guys. यही हमारे पास था आज. Remember, it's better to be safe than sorry. So अगर आपके पास एकदम short setup है, जरूर trade कीजिए. कुछ अच्छे setups हैं हमारे purple list में, which is end of week analysis and also end of month analysis. Choose the best ones and only get them into your portfolios. All right. Yes, Anuj, thank you. I've shifted to 1 hour chart. Accidentally, it was opened into a 2 hour chart. Thank you very much. Yes, so that's about it, guys. Thank you very much. I'll see you guys next week. Again, back to Friday's 7 p.m. analysis as was earlier. And trade safe, be safe, and take care. Bye-bye.